lasting effect on the Mahdiya diaspora in this land. There was no one more capable, possessing the sincerity and the zeal of taking on this task of community building. Other than him, he was a learned and towering academic on one hand and deeply devout spiritual leader on the other. His illuminating presence and most humble demeanor always left a lasting impression of people. He always led the person where they were in their journey towards Allah without judgment or criticism. He connected with and touched so many lives, both young and old. His writings, his sermons, and discussions all were deeply rooted in Islam and methodologies. He had an unmatched talent of breaking down highly complicated theological concepts into simple to understand perceptions. In gatherings, he spoke as the head of a family who, to his loved ones, would speak to his loved ones. For indeed, we were to him his family. As we dwelled in this vast garden of lush shade and splendor and enjoy the fruits of his labor, we thank Allah for the personality that was between us and has now returned to Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah we belong and to Him is our eventual return. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And the way to be grateful and honor Pir Murshid will be to uphold his mission and advice. He has laid down the foundation, the groundwork, and set the precedent. And what a solid foundation has Allah gifted us with. As we carry on this for future generations, our intentions too must be of compassion and self-sacrifice. If we are not capable of selfless love, then we must plant seeds of love. We must do so by following Pir Murshid's advice to us. Advice that he gave us individually and collectively. And we must do so by emulating his example. I am fortunate enough to be among the early community of Chicago and have grown up in front of Pir Murshid and Bibi Murshideen. Our small community back then was like a tight-knit family. For me and my generation, he was the living and breathing exemplar of our Mahdiya teachings. I am honored to be amongst his murideen. He will be missed greatly. May Allah raise the maqam of Pir Murshid Abulfatah Syed Nusrat Sahab Qibla TashreefullahiRH and bestow upon him his didar. And may Allah give sabr to Pir Murshid's family in this difficult time. Ameen. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. जब तुम जिक्र में बैठते हो तो शैतान भटकाता, फिर जाओ वजू करो, तहियतुल वजू करो, पढ़ो, सिजदे में दुआ करो, फिर जिक्र करो। तो मियाँ की जो तालीमात थे, ये बंदा नाचीज भी मियाँ के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, यहाँ के पुराने लोग जानते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मियाँ की जो चीज़ें थे मेन तालीमात पे, उनकी तालीमात पे अमल करना, उनसे मोहब्बत करना है। सबसे पहले आप ये कहते थे कि हमेशा ईमान की हिफाजत करो, अकीदे को जाहिर करो, अपने बच्चों को ईमान बताओ और उस पर अमल करने की तरगीब दो। ईमान की हमेशा हिफाजत करना। हम कहते हैं कि ईमान बिल खैर खातिमा ईमान पर है, लेकिन ईमान की हमेशा हिफाजत सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मियाँ का था, ईमान और अकीदे की हिफाजत। दूसरा जो मियाँ कहते थे वो है अमल। अमल के ताल्लुक से बहुत जोर देते थे और ऐसा अमल रियाकारी का नहीं, खुलूस से दिल के साथ अमल करो। अमल 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 हमेशा मियाँ है। और तीसरी बात जो मियाँ की थी वो मियाँ के खुद सिफात में यह थी कि मियाँ के अखलाक ऐसे अखलाक थे, मियाँ अगर किसी को नाम से पुकारते तो उसका दिल खुश आता, इसी नरम गुफ्तगू आजिज़ इनके सरी के साथ करते थे हमेशा। और चौथी चीज जो है मियाँ का सब्र था। ये सब्र सिर्फ कहने के लिए सब्र है, लेकिन जब वक्त आता है तो इंसान जो सब्र करता है, मियाँ की जिंदगी को देखकर हम सीखे हैं कि सब्र कैसा करते हैं हालात। और पांचवी चीज मियाँ दरगुजर और माफ करते थे। तो हमको चाहिए कि मियाँ के तालीमात पर अगर हम अमल पैरा रहेंगे तो हकीकी मानों में मियाँ से मोहब्बत का सबूत पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझ जैसे गुनाहगार और तमाम को मियाँ के तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जनाब अफजल अहमद खान से गुजारिश करता हूँ कि मुखातिब